everyone. It is my honor to welcome you all on this special day. I, Yadnesh Wakharkar, and I, Siya Chakta, welcome you all on behalf of Podar International School, Chinswad. We are glad to have you here with us for celebrating our annual day for the year 2021-22. We are pleased to welcome our beloved Principal Mrs. Shaina Scotta Ma'am and Vice Principals Mrs. Archana Karande Ma'am and Mrs. Manisha Gosarwade Ma'am. Guest of honor Mr. Franklin Sir, General Manager of Pune Hub, teachers, parents and my fellow mates for the 14th annual concert of Podar International School, Chinchwad. As quoted, if you light a lamp for someone else, it will also brighten your path. Like every other auspicious occasion, let's start this event by offering our prayers to Ma Saraswati, the embodiment of knowledge, and conduct our customary lamp lighting ceremony as a tribute to Ma Saraswati. I invite our Honorable Principal Mrs. Shaina Scotta Ma'am for lamp lighting and thank Goddess of Knowledge for blessing all of us. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ शान्ति 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 असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय. Thank you, ma'am. May Goddess Saraswati bless us with more success in school and the future. I would like to invite Franklin Sir to grace us with his thoughts. Respected Principal Madam, teaching and non-teaching staff, dear parents and my dear children, I really happy to be here to speak about your annual day, 13th annual day. This is going to be e-annual day because of all the pandemic issues. I really appreciate the children efforts for making this annual day more successful in very short span of time. I hope that really the children will enjoy and doing all this, and I also appreciate about the PAA Chinchwad team to make this annual day this beautiful and success. I appreciate the PAS team for making all the events successful throughout the year. I wish them all the best for their future endeavors. Thank you very much. Thank you, sir, for motivating us. Now I request our beloved Principal Ma'am to speak a few words on this special occasion. Greetings from Podar International School, Chinchwad. I, on behalf of the management, staff and students, would like to welcome our parent fraternity to the 13th annual day of Podar International School, Chinchwad. The theme for this year in the morning is Azadi Ka Amrit Mahotsav, where we are sharing the glorious 75 years of India's independence. And in the afternoon, we have Karamveer, the unsung heroes of India. Parents, take a look at these videos. This is from the production house of Podar International School, Chinchwad, where the art, decoration, dance, acting, editing, direction, producing is all done by the staff and students. It would be a proud moment for all of us to showcase this in front of all of you. The parents, I would just request you all to watch at these videos, share your comments, your Google reviews, and also your likes or dislikes if something does not touch your heart. We at Podar International School, Chinchwad, have seen the children coming back to write the offline exams. We saw a large amount of turnout for the students writing their exams physically. And we really hope
that the 2 years that they spent at home has come to an end. And we are looking forward to see them in school starting in the session of April. The annual report for this year would be shared by my budding students of our school, where they would showcase the entire list of competitions, activities, projects that they have done throughout the year. Though we know that we are going through a pandemic and classes were virtual or online, but then too, the children did not fail to produce extraordinary projects and competitions. They gave their best. So we are looking forward to all of you all, or to the parent fraternity, to kindly go through the video and share your likes and comments about the same. Thank you, and looking forward to seeing you in the new session of April 2022. Thank you. Thank you, ma'am, for enlightening us with your valuable words. Now I call upon my friend Ruchita Nangal to present the annual report. Virtually, nothing is impossible in this world if you just put your mind to it and maintain a positive attitude. Good evening, everyone, and welcome to Uda International School, Chenchwad, report reading for the academic year 2021-22. The annual report forms an integral part of the annual day celebration, as it gives an overview of all the activities and achievements conducted in the academic session. Our school is our pride, and we feel privileged to belong to Uda International School, Chenchwad. The mission of our school is to develop and equip the children of India for the challenges of 21st century. And the vision is to be the best and be recognized as raising the traditional standard of educational possibilities and outcomes for students, parents, and society. Our values are to make students innovative, committed, open to new learning, and see that these values stand strong in the long term. The core strength of any institution is its people. And the testimony to this are we, the students of Uda International School, Chenchwad. We are proud to announce that Class 12 Science and Commerce stream have secured 100% results in the board examination 2021. Mahima Srivastav from the science stream makes all of us happy by scoring 97.6%, and the commerce topper Kini Mehta scores 96%, adding one more feather to the cap. In the science stream, a total 64 students appeared for the boards, out of which 63 got distinction and 1 stood first class. In the commerce stream, in all, 14 students appeared for the boards and 12 students got distinction and 2 students got first class. Now coming to standard 10th board results. I feel immensely proud to announce that standard 10th students have left no stone unturned. They have made everyone of us proud by scoring 100% results. Ruchika Medkar breaks the previous record by scoring 99%. Wishing good luck to upcoming batches and hoping that we will reach higher goals every year. The pandemic has completely changed our lives. At the same time, given us challenges for our growth. After a long gap of online schooling, coming back to school physically was an overwhelming experience and joy that cannot be expressed in words. The students of classes 8th to 12th started physical schooling from 7th of January. Later on, from grade 1st to 12th began from 2nd of February 2022 with hybrid teaching. Newness inspires us. The pandemic has given us new experiences to learn new skills and new techniques. In this lockdown, our Uda pillars took the teaching and learning process to the next level. They optimally used all the resources so that our students get best form of them. We feel proud to share about our school podcast series
where teachers and students of our school shared their creativity. This pandemic made us realize the importance of our health and well-being. For that, different activities were conducted in school by teachers and counselors. COVID pandemic has not only impacted human life but also education all over. It has made us realize the importance of online education. The quick transition to the online form of education became a success and has helped students and teachers to bridge the gap and be more prepared for the future. Virtual workshops were conducted for teachers to enhance and develop teaching skills. Our young Kodarites participated in certain fun activities like virtual tours, after-school clubs, and many more. Celebrations were needed more than ever to lift everyone's spirit and give hope for a brighter tomorrow. So we created special memories by celebrating different occasions virtually. Let's have a glimpse of the activities. Gudi Padwa celebration, National Panchayati Raj Day, English Language Day celebration, Earth Day, National Environment Day, International Yoga Day, World Music Day, National Sports Day celebration, Guru Purnima celebration, 75th Independence Day, Sanskrit Divas celebration, Janmashtami celebration, Ganesh Festival celebration, Teachers Day celebration, Hindi Divas Samaroh, Diwali celebration activity, Diwali Pahat, Children's Day celebrations, Christmas celebration, 32nd Republic Day celebration, 35th Independence Day Special Assembly by students of grade 4, Annual Sports Meet, जागतिक मराठी भाषा दिवस, एक भारत श्रेष्ठ भारत उड़ीसा वर्णमाला, खिलौना टाइम स्टैंडर्ड 4th, 75th आजादी का अमृत महोत्सव. Co-curricular activities are an integral part of holistic education. Realizing this, students were provided opportunities to take part in a number of activities and competitions to display their talents and abilities. Feast and flavor with dad, day and night activity, virtual storytelling activity, EVS plants activity, computer tux paint activity, Hindi Divas Karyakala, a role play activity. In the Swarveer competition, our young Podarites mesmerized everyone with their melodious voices. Angad Vitlani from grade 4 has actively participated in Pan-India elocution competition organized by Podar Education Network in association with Helen O. Grady International. He was awarded as second runner-up from class group 4th to 6th. We also had in-house competitions like making bouquet for dad, fancy dress competition, collage making competition, cooking without fire competition, killa making competition, 3D model making,
where our young Kodarites showcased their talents. Optimism is the faith that leads to achievement. Nothing can be done without hope and confidence. Bravo to our Podar teachers who attended different workshops and sessions. Kudos to our Podarites for their outstanding performance in SOF examinations. An awesome teacher is hard to find, difficult to part with, and impossible to forget. The International Institute of Hotel Management (IIHM) acknowledge the efforts and hard work of the teachers and the principal of Kodar International School, Chinchwad, certificate of appreciation for being a strong pillar as Corona warriors during this pandemic time. The president of the Lion Cup, Akodi, Mr. Vikram Mane, accompanied by the other members of club, felicitated the principal of Kodar International School, Chinchwad, Ms. Shehnaz Cotton, in recognition of her undying efforts, dedication, and commitment towards the youth of the country will contribute for the upliftment of the society in future. She has made endless contributions in the field of education and did ordinary things in an extraordinary manner to touch human life. Her notable work in educational sphere serves as a light, motivating factor for many to jump over the barricade of fear and reluctance that cordon your way to try novel ways that would foster joy in the tender minds, help them unleash their potential, let their passion flourish, and make winning a habit. Success does not lie in results, but in efforts. Being the best is not so important. Doing the best is all that matters. We were proud recipients of an array of awards for India's most respected early childhood education brand, the Education World 21-22, the most respected education brand in India, the Education World 21-22, leading school chain, national 2022, Adercom Media Group 2022, most distinguished international school network of the year, Education Excellence Awards 2020-2021. Best Preschool Brand of the Year, Education Excellence Award 2020-21. Best Preschool of the Year, Global School Award 2020-21. Iconic Brand of the Year 2020. Outstanding Educational Network in India, The Economics Times 2020-21. Times Education Icon, Times Group. Best Use of Technology in Educational Sector, World Education Congress. Outstanding Educational Network in India, Global Choice Award. India's leading school chain of the year 2019, Blindwise.in. Thank you all. We remain grateful to our parents for reposing unparalleled trust in us, which propels us to march ahead with greater commitment and enthusiasm. Thank you all. Thank you, Ruchita Nangat, for presenting the annual report. As we all know, dance has no barriers. It is something that everyone can feel, everyone can understand, and definitely something that everyone can enjoy. Before starting a program, we always seek Lord Ganesha's blessing. So let's welcome the students of grade 1st A with a huge round of applause presenting Ganesh Vandana. गजानना पार्वती नंदन गजानना विघ्न विनाशक एकदंताय गौरी पुत्र गजानना
वरदान हे देवांचा तू देव मोरया गातो तुझे गुणगान वाट नवी चालाया दे तू शक्तीचं वरदान तुझं वीण कोणी दयाळा माझ्या मनीची ठेवी जाण घेऊन बसा भरतीचा चालू बाप्पा मोरया Splendid welcome by the students of grade first day under the guidance of Ketki Ghorpade ma'am. Let's have a huge round of applause for them to bring down God's Ganesha's blessings on all of us. Now I invite our school guide to present a melodious song. वंदे
such a tuneful performance by the students of grade 1st to 4th under the guidance of Mangesh Dandare sir. Please give them a huge round of musical applause. So, to begin the series of wonderful dance performances followed by a skit, I call upon Adrit Pathak as father, Ishika as mother, and Ananya playing the role of their child. The theme of this annual concert is Azadi Ka Amrit Mahotsav. Let's now enjoy this wonderful journey presented by the little stars of grade 1st to 4th, showcasing pre-independent India, independent India, and post-independent India. Mama, Mama, What happened, my child? Mama, I had a great day today. I am very excited to do my integrated project which my teacher has given me. Oh, that's good. What is the project about? It's a meaningful phrase. Azadi, Azadi. I am unable to recall it. It's about our independence, freedom struggle, advanced India. Is it Azadi Ka Amrit Mahotsav? Yes, Mama, amazing. How did you know about it? We are celebrating 75 years of independence, which is known as Azadi Ka Amrit Mahotsav in Hindi. Azadi Ka Amrit Mahotsav is an initiative of the Government of India to commemorate and celebrate 75 years of our progressive India and the glorious history of its people, culture and achievements. Yes, this is what our teacher also told us. So, Mama, are we going to have a grand celebration? Celebration? Which celebration are you talking about? A very important celebration about the significance of India's freedom struggle. Oh, I am really interested to know the whole history of India. Since ancient times, India has been known as Sone Ki Chidiya due to the abundance of culture and tradition, rich heritage and breathtaking art and architecture. So here we have the students of grade 4th C and D representing the golden era of India. अंबर हेठा धरती वसदी इत्थे हर रुत हसदी हो किन्ना सोहना देश है मेरा देश है मेरा देश है मेरा किन्ना सोहना देश है मेरा देश है मेरा देश है मेरा देश है मेरा धरती सुनहरी अंबर नीला धरती सुनहरी अंबर नीला हर मौसम रंगीला ऐसा देश है मेरा हो ऐसा देश है मेरा ऐसा देश है मेरा हाँ ऐसा देश है मेरा बोले पपीहा कोयल गाए बोले पपीहा कोयल गाए सावन घिर के आए ऐसा देश है मेरा हो ऐसा देश है मेरा ऐसा देश है मेरा हाँ ऐसा देश है मेरा ऐसा देश है मेरा हो ऐसा देश है मेरा ऐसा देश है मेरा हाँ
देश है मेरा। Wow, spectacular! Please put your hands together for the rapid moving steps of the students of grade 4th C and D, guided by Rupali Adkar ma'am and Yogesh Bhausar sir. Now I understand. India was the richest and the prosperous country in ancient times. But then what happened that changed the scenario? There were numerous kingdoms in India. You will learn about Chandragupta Maurya, Ashoka the Great, Prithviraj Chauhan, Maharana Pratap, Chhatrapati Shivaji Maharaj, and many more. Come, let us see the culture of princely states in India by the girls of grade 1st C and D. That was a mesmerizing performance by the cutie pies of grade 4 C and D girls, performed under the guidance of Sheetal Pathak ma'am. We had many more brave warriors, and one of them was the great Bajirao Peshwa. He fought 41 battles in his lifetime and didn't lose anyone. Oh really? Oh really? This is so surprising to know. I would love to know more about him. Here comes the students of grade 3rd D showcasing Bajirao Peshwa.
बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी खड़क धड़क भड़क साली चटक मटक फटक साली दुश्मन की देखो जो फाट लावली बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी धड़क धड़क भड़क साली चटक मटक फटक साली दुश्मन की देखो जो फाट लावली बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी धड़क धड़क भड़क साली चटक मटक फटक साली दुश्मन की देखो जो फाट लावली धीरे धीरे बड़ी चली जो थी चिंगारी छोटी चिंगारी भरी 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 है मन की अलमारी आज अलमारी हुई सतरंगी साली सतरंगी हुई सतरंगी थी जो ये रात काली धड़क धड़क भड़क साली चटक मटक फटक साली दुश्मन की देखो जो फाट लावली Indeed, a lovely performance by the students of grade 3rd B under the guidance of Deepali Chavan ma'am, which totally fascinated the spectators. There were numerous kingdoms in India, but they were not united, which led the invasion of foreigners. They would defeat the kingdoms and take away the resources. This was the time when Mughals entered India, and many of our kings and soldiers fought with them. And one of them was the great Chhatrapati Shivaji Maharaj. You are right. I know one TV serial being telecast nowadays on Chhatrapati Shivaji Maharaj. Yes, dear. Shivaji Maharaj is also known to have laid the foundation of Maratha Empire and fought courageously against Mughals to establish the Maratha rule. ते मावळे होते, जगवणारा तो महाराष्ट्र होता. पण स्वतःच्या कुटुंबाला विसरून जनतेच्या डोक्यावर मायेने हात फिरवणारा तो माझा शिवबा होता. Let's enjoy the rocking performance by the students of 2nd D portraying the character and the nature of Shivaji Maharaj. Ashtakadam Maharaj Gadpati Bhupati Prajapati Jadpati Ashwapati Gadpati Swarnaratna Shripati Ashtavadhan Jagruta Nyayalankar Mandita Raniti Dhurandhar Paud Pratap Purandar Maharaja Dhiraj
राजाल राजाल जिंकुनिया जगभरी शिवबाराच नाव गाजली निगत वारकात कान भाळा भरी शिवबाराच डंक वाजली घडाने वाज मराठीचे गणिने आहे मनी खातोजी कंचा काढी करू द्या माझे आमच्या भाराने ठासली राजाल जिंकुनिया जगभरी शिवबाराचं नाव गाजली ताकती राख नव्याने जाग पेटू दे आग मराठी आता सटकून ताकती राख नव्याने जाग पेटू दे आग मराठी आता डोळ्यात पुढे अंगार भगन रक्तात जागू दे गाज भवानी माता हे राजे जीर जीर हे राजे हे राजे हृदयात जागू दे पुन्हा माता जोश दाही दिशी घुमू शिव छत्रपतींचा घोष हृदयात जागू दे पुन्हा आता दांगडा जोश दाही दिशी घुमू शिव छत्रपतींचा घोष लढण्या संग्राम आज हो हळदे या मनघटी आम्हा करण्या तुम्हारी शत्रूचा जन्म घे पुन्हा आता हे राजे जीन चंद्रजी राधे हे राजे जीन चंद्रजी राधे हे राजे जीन चंद्रजी राधे Indeed, it was a stunning performance by the students of grade 2nd D performed under the guidance of Deepali Khomane ma'am. But when Mughals came, by the time Britishers invaded India, the Britishers ruled India for around 150 years. They imposed their own laws. They even excluded Indians from responsible positions in the government. Oh my God! Then how did Britishers go from India? The British left us only because of the freedom fighters like Mangal Pandey, Subhash Chandra Bose, Rani Lakshmi Bai,
Mahatma Gandhi, and many more, who fought injustice, made people aware of their rights and power, and were the pillars behind the freedom struggle. Come, let's witness the efforts of freedom fighters through a dance presented by the students of grade 2nd A and B. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बूंदों से बनता सागर, फसलों की धानी चादर, देखा है हमने सब यहाँ। ओ पर्वत की चोटी चढ़ना, मेहनत से आगे बढ़ना, सीखा है हमने सब यहाँ। ओ सोने की चिड़िया हो या मिट्टी का घरौंदा, सपनों का अपना है जवाब। ये देश है वीरों का, ये देश है वीरों का, इस देश की हर गाथा है महान। हर लफ्ज़ ये कहता है, हर आँख में रहता है, हर सांस में बहता है हिंदुस्तान, हर सांस में बहता है हिंदुस्तान। गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। उन्हें हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, खूब लड़ी मर्दानी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। पेड़ों की छाँव। मंगल 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 हो। मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे रंग दे रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे।
सबसे पहले सबसे बढ़ के दिल में मेरे है ये मेरा वतन, आसमां भी हार जाए कर ले कोई जतन। सबसे बढ़ के दिल में मेरे है ये मेरा वतन, आसमां भी हार जाए कर ले कोई जतन। मैनू लग गया ओ मैनू लग गया ओ मैनू लग गया लग गया लग लग गया लग गया लग लग गया कसुंदी रंग ऐसा। मैनू लग गया लग गया लग लग गया लग गया लग लग गया कसुंदी रंग ऐसा। मैनू लग गया लग गया मैनू लग गया लग गया मैनू लग गया कसुंदी रंग ऐसा। मैनू लग गया लग गया लग लग गया लग गया लग लग गया कसुंदी रंग। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। Really incredible. It was a heart-touching performance by the dancers of grade 2nd A and B, performed under the guidance of Deepalata Chaudhary ma'am and Smita Ingre ma'am. Because of their sacrifice and efforts, India got independence and prospered into a free country. Let's welcome the students of grade 2nd C displaying the joy of independence. हो मारे या कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है। ऐसे हैं चाहे वैसे हैं, अरे जो भी हैं जैसे हैं, खुद पे हमें न्याज है। जाने ना हमको ये जमाना, चाहो तो हमको आसमाना। यार बाज हम चाल साज हम इश्क बाज दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले। छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, हर चीज जीत ले हार से इंडिया वाले। दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहाँ है सबसे प्यारा। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहाँ है सबसे प्यारा। हमने कहा है जो तुम भी कहो,
energetic performance put forth by the students of grade 2nd C under the guidance of Shraddha Jadhav ma'am. Dad, then what happened after independence? It was a time for India to start its journey of development and to take itself forward with new resolutions and to build a new India. Now I call upon our graceful dancers of grade 1st B portraying the new journey of India. छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखे हम मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखे हम मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पर जा पहुंचा है आज जमाना, नई जगत से हम भी नाता तोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंग है, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। हमको कितने ताजमहल है और बनाने, कितने हैं अजंता हमको और सजाने। अभी पलटना है रुख कितने दरियाओं का, कितने पर्वत राहों से है आज हटाने। नया खून है, नई उमंग है, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आओ मेहनत को अपना ईमान बनाए, अपने हाथों से अपना भगवान बनाए। राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। नया खून है, नई उमंग है, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें। What a lovely performance by the students of grade 1st B guided by Rohini Patak ma'am and Bhagyashree Kulkarni ma'am. India is basically an agriculture country. As you know that we have undergone a green and white revolution which has given us the food security. So here comes the students of grade 3rd A presenting the
the White Revolution. मेरो गाम कठा पाड़े जहाँ दूध की नदियाँ बाहे मेरो गाम कठा पाड़े जहाँ दूध की नदियाँ बाहे जहाँ कोयल ढोको गाए मारे घर अंगना ना भूलो ना रे मारे घर अंगना ना भूलो ना हर काम की मक्खन रोटी लाए खुशियाँ छोटी छोटी खुश रह तेरा बेटा बेटी जैसे चमके हीरा मोती तेरे आंचल में तेरे चेहरे की ये लाली लाए मारे मन उजाली आंगन आंगन है खुशहाली हमारे घर झांझर लक्ष्मी के बाजे हमारे घर झांझर लक्ष्मी के बाजे पधारो हमारे गाँव ओ परदेसिया ओ परदेसिया ओ परदेसिया सपने हो गए हैं साकार दम के मारा ये घर बार आवे खुशियों की फुहार 12 महीना है त्योहार घर वाली बनी रानी मारे काम की ये कहानी सुनो सुनो रे दूध का सागर बहता जाए कंगन सोने के खनकाए सुनो द्वार पे शहनाई हमारे घर झांझर लक्ष्मी के बाजे हमारे घर झांझर लक्ष्मी के बाजे हमें आना पड़ेगा मत भूलो मोरे शान दूध मक्खन समय खाओ खट्टा खट्टा बन जाओ हमारा खान ओ हमारा खान हमारे घर अंगना ना भूलो ना 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 I'm completely energized. It was a graceful performance by the students of grade 3rd A under the guidance of Jayashree Hazare ma'am. Since independence, there is a lot of progress in women empowerment. Today, women are everywhere. The country excites female prime minister and president. There are many eminent sports people like P.T. Usha, Saina Nehwal, Mary Kom, P.V. Sindhu and many more. The country has been blessed with many women scientists. Women are also joining the combat forces in India without any hesitations. Let's enjoy the Takat performance by the students of grade 4th A presenting the women empowerment. भारत मेरा देश। हाँ, प्यार है मुझे इस नाम से, इस हस्ती से। क्या मेरा समाज स्वीकार करेगा अगर मैं भी अपने देश की रक्षा करना चाहूँ, अगर मैं भी एक फौजी बनना चाहूँ? तुम एक लड़की होकर फौजी बनना चाहती हो? शादी, बच्चे, घर संभालना, कैसे होगा ये सब? तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो और एक अच्छी सी नौकरी ढूंढो। ये लड़कियों के लिए नहीं है। What? Indian Forces? You know, it is not meant for girls. इसलिए ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। एक फौजी बनने के लिए फिजिकली और मेंटली कितनी स्ट्रेंथ चाहिए होती है।
and being a girl, it's not possible for you. खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। वो तुर जा तू ना डरना कभी, ना घबरना कभी। वो ले जा तू उखाड़ के जमीन। ओ फुर जा तू ना रुकना कभी, तू ना झुकना कभी। झीले अपनी जिंदड़ी। वो मार झड़पा, वो चांद पे चढ़ जा। उड़ जा बढ़ के आसमान की परी। उड़ जा बढ़ के आसमान की परी। खुदा को डर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा रुक गए मुझे बता क्या चाहिए बंदे। खुदा को डर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा रुक गए मुझे बता क्या चाहिए बंदे। छोरी है, समझ के लड़ियो। बस छोरी समझ के ना लड़ियो। ऐसी तेरी अकड़ की रस्सी जल जाएगी, पकड़ में इसकी आग है। यो ऊंची टेप से नापेगी, तेरी कितनी ऊंची नाक है। तेरी सांसें अटक जाएगी, वो जोर पटक जाएगी। तने चारों खाने चित कर देगी, तेरे पुर्जे फिट कर देगी। डट कर देगी, तेरे दांव से बढ़कर पेच पलट कर देगी। चित कर देगी, चित कर देगी। ऐसी धाकड़ है, 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 ऐसी धाकड़ है। स्पीड सुपर फास्ट बड़ी, छोरी जबर जात बड़ी। पापा इतने छुटे का जो सीता फिर गीता बनी। चीता इससे पहले कि पपीता गिरे झाड़ से, धाड़ से पछाड़ गई। छोटी ना उखाड़ गई। जितने टाइम में तू देख पाए पल के झपक कर लपक कर निकल जाएगी। राइफल की बुलेट को भी टक्कर दे जाएगी। तने चारों खाने जित कर देगी, तने चारों खाने जित कर देगी। तेरे पुर्जे फिट कर देगी, डट कर देगी। दांव से बढ़कर पेच पलट कर देगी। जित कर देगी, जित कर देगी। ऐसी धाकड़ है, 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 ऐसी धाकड़ है। What an amazing performance by the students of grade 4th A, guided by Rohini Patil ma'am. Oh, I am really amazed to know the growing progress of our country. Along with this, we have achieved progress in numerous fields like higher education, nuclear power station, and stunning economic growth. Even our literacy and social empowerment has improved a lot. Put your hands together for students of grade 4th B presenting the educational growth.
कदमों को थामो ये है उड़ते जोश में, बादल पे पाँव है या छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है, बादल पे पाँव है या छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। बादल पे पाँव है या छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है, बादल पे पाँव है या छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। It was a marvelous performance by the students of grade 4th B under the guidance of Aparna Deshmukh ma'am, which totally fascinated the spectators. After independence, no one has tried to invade us, right? Yes, because the armed forces are slowly but steadily making progress and embarking on a new era of technological warfare, which consists of information technology, artificial intelligence, and robotics. Let's see the josh of students of grade 4th E presenting the armed forces. राजस्थान की तपती धूप में खुद को तपाते हैं, कभी सियाचिन की बर्फ की चद्दर ओढ़ के सो जाते। घर वालों से दूर रहना हमारे लिए भी कहाँ आसान है, पर सच तो ये है, घर से पहले हमारे लिए हमारा हिंदुस्तान है। खून से खेलेंगे होली अगर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। जोश में चला जलजला चला, अब रुकेंगे ना हम,
डर मिटा चला सर उठा चला अब झुकेंगे ना हम जोश में चला सर चला अब रुकेंगे ना हम डर मिटा चला सर उठा चला अब झुकेंगे ना हम ओ थारे बासी तेरे माड़ी रे जान लगा देंगे हम थारे बासी तेरे माड़ी रे दुनिया हिला देंगे हम चला चला अब रुकेंगे ना हम डर मिटा चला सर उठा चला अब झुकेंगे ना हम जोश में चला सर चला अब रुकेंगे ना हम डर मिटा चला सर उठा चला अब झुकेंगे ना हम Incredible! The dancers of 4th have held everyone captive with their splendid performance guided by Vibha Mathur ma'am. In the past 7 decades, India has built satellites and sent probes to Moon and Mars, established nuclear power stations. Our former president, Mr. APJ Abdul Kalam, has been a pioneer of missiles in India and hence is referred as the Missile Man of India. Yes, you are right. I have watched Mission Mangal movie. I am really proud of our scientists. I would love to be a scientist and contribute my nation. Next we have the students of grade 1st C and D paying tribute to our scientists. Mission Mangalam. Om Mangalam, Mission Mangalam. Om Mangalam, Mission Mangalam. मंजिल दूर 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 है मुश्किल पास है फिर भी ख्वाब 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 में ट्विंकल स्टार्स है Om Mangalam, Mission Mangalam. मंजिल दूर 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 है मुश्किल पास है फिर भी ख्वाब 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 में ट्विंकल स्टार्स है चांद को करके रहेंगे आज ओवरटेक हम पूरा चांस है 3, 2, 1, boom. दिल में मार्स है क्योंकि दिल में मार्स है अपने दिल में मार्स है उड़ने की प्यास है दिल में मार्स है मंगलम मिशन मंगलम स्पेस मंगलम शटल मंगलम पूर मंगलम स्वैग मंगलम हैश मंगलम टैग मंगलम प्रेम मंगलम मिशन मंगलम काउंटडाउन इग्निशन मंगलम मंगलम मिशन मंगलम टेलीस्कोप डायरेक्ट Om Mangalam, Mission Mangalam. Om Mangalam, Mission Mangalam. अपने ब्रेन 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 की है कारस्तानी हम तो ढूंढ 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 ले फायर में पानी अपने देश 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 में सब कुछ मुमकिन है वी डोंट नीड 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 नो मेहरबानी थोड़े फेल 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 है फिर भी पास है फुल टू मूड 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 में हम बिंदास है चांद को करके रहेंगे आज ओवरटेक हम पूरा चांस है 3, 2, 1, boom. दिल में मार्स है ओ दिल में मार्स है अपने दिल में मार्स है उड़ने की प्यास है
students of grade 4 C and D, guided by Dipti Anand ma'am. It was truly a proud moment for all of us. Yes, you are right. To make this mission successful, a lot of efforts were taken by our Indian scientists. But this is not the end, as they still work together to fight against disaster. Recently, with lots of efforts, our Indian scientists have achieved success in making vaccine to overcome COVID-19. Even this pandemic has brought us back to our traditional way of meeting our well-wishers. What was the traditional way, Mama? Since ancient times in India, Namaste is a respectful gesture used to welcome our guests or relatives to express honor, courtesy, politeness and gratitude to the other people. Now it is helpful to prevent the spread of COVID-19 as no contact. So let's enjoy the dance performance by the students of grade 3rd C representing the gesture of India. नमस्ते नमस्ते हाथ जोड़ो जोड़ो करो तुम नमस्ते 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 हाथ जोड़ो जोड़ो करो तुम नमस्ते ए डोंट वरी सब हो जाएगा ठीक स्ट्रॉन्ग बनो डोंट बी वीक ज़मीर हम लोगों का मैला हुआ है इसीलिए वायरस ये फैला हुआ है सब स्टॉप हो गया सेंसेक्स ड्रॉप हो गया मत करो तुम इतना पैनिक डूब जाएगी फिर टाइटैनिक ट्रैवलिंग को रोक दो इस वायरस को ठोक दो जोक नहीं सीरियस है ये मैटर मिस्टीरियस है डोंट गो आफ्टर बकरी खाओ दाल सब्जी ज्यादा खाओ भीड़ भाड़ में कम जाओ ड्रीम हो जाओ जिम जाओ गले लगाना हाथ मिलाना सब छोड़ रही है पब्लिक दुनिया भर की अब हाथ जोड़ रही है हाथ जोड़ना बोले तो नमस्ते नमस्ते तुम भी सब करो ना फिर खुल जाएंगे रास्ते नमस्ते नमस्ते हाथ जोड़ो जोड़ो करो तुम नमस्ते 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 Namaste, namaste. It was a wonderful performance by the students of grade 3rd C under the guidance of Kavita Sharma ma'am. Now I understand in India, Namaste is helpful to establishing a connection with people without any connect and forming a great bond. The progress is not even stopped here. The efforts and vision towards the progress and development of India is still a dream which rests in the hands of the future generation. So here comes the students of grade 3rd D celebrating the glorious years of independence. सत्य शिव सुंदर सफल सत्य शिव सुंदर सफल सत्य शिव सुंदर सफल सत्य शिव सुंदर सफल जय इंडिया जय भारतम जय इंडिया जय भारतम विश्व गुरु का मान लेकर शून्य का सम्मान लेकर प्रजातांत्रिक ज्ञान लेकर अमन का अरमान लेकर विश्व में खिलता कमल जय इंडिया जय भारतम जय इंडिया जय भारतम तहजीब का संगम यहाँ जो भी असंभव विश्व में संभव यहाँ संभव यहाँ
मेरी धरती मुझसे पूछ रही कब मेरा कर्ज चुकाओगे। मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा कब अपना धर्म निभाओगे। मैंने वचन दिया भारत माँ को तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। ये देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। वो जितने अंधेरे लाएंगे मैं उतने उजाले लाऊंगा। वो जितनी रात बढ़ाएंगे मैं उतने सूरज उगाऊंगा। इस छल फरेब की आंधी में, छल फरेब की आंधी में ये दीप नहीं बुझने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। ये देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। ये देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। This performance was just like icing on the cake. Fantabulous! Presented by the students of grade 3rd D, guided by Ashwani Devgakar ma'am. The flame of independence and the sacrifice of great freedom fighters is what will keep us moving ahead towards self-respect and self-reliance with the beginning of Azadi Ka Amrit Mahotsav. The sun that rises has to set. The flowers that bloom have to bloom. Like every event which begins has its ending, and now we are at the end of this program. But this program wouldn't have been possible without the contribution, guidance and support by the entire PIS family. So here is a special video as a gratitude for the efforts put in by each and every member of the PIS team. कहते थे लोग जो काबिल नहीं है तू, देंगे वही सलामियाँ। दिल थाम के जहाँ देखेगा एक दिन तेरी भी कामयाबियाँ। करके दिखा कमाल